Assalamu alaikum ji, Bismillahirrahmanirrahim, and a very warm welcome to tonight's session of our fireside chats held by Noor International University, NIU. आज हमें join कर रहे हैं जी Dr. Khalid Mahmood साहब, an international inspirational speaker, life coach, relationship coach, and leadership coach. Thank you, Khalid साहब, and Assalamu alaikum. Khalid Saab, I think is just joining us. Khalid Saab, Assalamu alaikum, sir. Thank you again for joining us, sir, tonight. And जो typical हमारा fashion होता है, sir, हम quick एक break लेंगे for introducing Noor International University and some of the programs जो कि आजकल हमारे चल रहे हैं, and then we'll come back to you formal तारुफ के बाद आज का session begin करते हैं. Over to you, admin team. Sure. जी नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक. सो मैं जी एक अपॉर्चुनिटी लेता हूँ डॉक्टर खालिद साहब को इंट्रोड्यूस करने की. Dr. Khalid Mahmood is an international inspirational speaker, life coach, relationship coach, and leadership coach. Dr. Khalid holds a PhD in complementary medicine and MD in alternative therapies. He was the first person certified in Pakistan by leadership expert John C. Maxwell from the US, who has authored 86 books and has his leadership books are standard issue for a number of armed forces academies and is part of the standard curriculum of the Pakistan Army as well. Dr. Khalid has been mentored by world top life coaches such as Tony Robbins, a renowned relationship coach, Richard Brandler, founder of NLP, जिसके बारे में आज थोड़ा सा बात करेंगे, Bob Proctor, world's renowned expert on law of attraction, and many more. He is also a member of Association of Integrated Psychology in the US, Society of NLP in the US, British Council for Complementary Therapies in the UK. He coaches entrepreneurs, business leaders, top executives, professionals, parents, and youth, including young leaders and students all over the world in the fields of leadership, mind sciences, and entrepreneurship. Dr. Khalid is the founder and CEO of True Training Academies, Infinite Mind Power, and Digital Mastery Center. He holds global engagements in the field of personal and business development. Dr. Saab, what an amazing background, mashallah, with which we are graced with. Thank you for your presence today. तो डॉक्टर साहब, over to you. थोड़ा सा अपने बारे में बताइए माशाल्लाह, in your professional journey, personal journey, what kind of made you इस तरफ आपने जो gravitate किया on life coaching, on leadership coaching, उसके बारे में बताइए, and tell us who we see on screen today. Thank you very much for your kind introduction. पहले मुझे ये बताइए कि आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है, क्योंकि आपकी आवाज काफी स्लो हो गई थी बीच में. Oh, my apologies. आपकी आवाज तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास आ रही थी. Perfect है, आपकी आवाज स्लो थी, but I could understand that. Great. अच्छा जी. Not going into too much of myself, I would like to talk about my journey so that लोग उसको connect कर सके कि कैसे ये सारी transformation होती है. It has been almost 30 years when I left home at the age of 17 for the quest to know, to learn कि जिंदगी में मुझे क्या करना है.
So I joined two defense forces. First जब मैं बहुत ही छोटा था, in my very early age, I joined Air Force. और फिर उसके बाद मुझे नहीं समझ आ रही थी कि is this for me or not. So then I left Air Force and then I joined Pakistan Army. Again, in Army, I almost served for around about 20 years, and my quest to learn remain on. I've been to, I think, all of the operations जो हमारे पाकिस्तान में हो रहे थे, may it be in a Kashmir sector, may it be in Wana, may it be in KPK. So I have been through almost all of the operations. और उसके बाद after going successfully from those operations, I have been to United Nations as well. I have been working with the defense forces of the world in Africa, Ivory Coast. और ये सारा कुछ करने के बाद still there was something again missing my life. It is a different story जिसके ऊपर एक complete book जो है मैं लिख रहा हूँ. मैं क्या लिख रहा हूँ? Somebody is writing from USA on my journey. तो वहाँ से फिर आई केम टू नो कि देयर इज़ अनदर वर्ल्ड आउट देयर जिसमें आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत फ़र्क डाल सकते हैं. So having gone through my own professional career, going through life and death situations and wars and bullets, tanks, everything, Cobra, helicopters and everything in the very hard operations. So almost 7 times I survived in my one-on-one operations. उसके बाद मुझे लगा कि there is another purpose I need to look for. So from there onward, there was a new journey. I started almost, you can say, maybe in 2008, I started learning the new things. So then I did 2 MBAs during my service. One was human resource management and supply chain management, just to look for that what is outside world. और फाइनली फिर ऑलमोस्ट 2010-11 में मुझे पता चला कि ओके व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, एंड दैट वाज दिस लाइफ कोचिंग जिसका मुझे पहले कोई पता नहीं था, और दिस साइकोलॉजी एंड एवरीथिंग. सो फिर अब उस टाइम पे जाके मेरा ख्याल है हैविंग अ कंप्लीट करियर बिहाइंड यू एंड द होल कोर्सेज एंड एजुकेशन रिलेटेड टू योर ओन करियर, to just join the new career you need another type of education, qualification and everything. And I believe कि जब आप कोई भी करियर चूज करते हैं तो आपको पहले अपनी ज़ात पे काम करना पड़ता है. पहले आपको एक रेलेवेंट एजुकेशन, रेलेवेंट क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, तभी आप कुछ दे सकते हैं या नया कर सकते हैं. सो आई डिडंट बिलीव ऑन स्मॉल लिटिल सर्टिफिकेशंस एंड you start your life coaching career, because I knew that कि जब आप स्टेज पे होते हैं, जब आप कोचिंग या मेंटोरिंग वाले लेवल पे आते हैं, तो लोग आपकी तरफ देख रहे होते हैं और आपका एक एक वर्ड मैटर करता है. और अगर आप अपने ही बिलीफ्स में कहीं गुम हैं और आपके पास वो रेलेवेंट क्राइटेरिया जो उसका होता है वो पूरा नहीं है, तो यू कैन नॉट give a right service to the people. आपकी बातें गलत इंटरप्रेट हो सकती हैं, आपकी बातों को लोग देख रहे होते हैं, so you get come with the lots of responsibility. So then that is why I went to USA and I met these coaches. You can just see that those people who are in a top 10 category. So why I went all of that to see all of them, like as Bob Proctor, Richard Bandler, John Maxwell. I hope my voice is good, quality Perfect, is good. बिल्कुल बिल्कुल. So यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको इनफॉर्मल होके बताना चाहूँगा कि ये क्या फील्ड है जिसमें मैं हूँ. Basically, life coaching is a very vast field. It's not as easy. You just go and motivate people. And I don't call myself a motivational speaker. I don't use this word even for me, because to me there's no word like motivational speaker. It is something related to inspiration actually. So होता क्या है कि आप लीडरशिप की बात करते हैं जब लोगों को, कि आप बच्चों को आप लीडरशिप पढ़ाते हैं, आप लीडरशिप सिखाते हैं, but there is something more than a leadership.
that is to do with your personal, mental and emotional health. अगर आप की लाइफ में आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ ठीक नहीं है, सो यू वॉन्ट बी अ गुड लीडर. और अगर आपकी इमोशनल हेल्थ ठीक ना होने की वजह से आपकी मेंटल हेल्थ भी ठीक नहीं है, तो देन यू जस्ट कांट डू एनीथिंग बेटर. अब जस्ट मोटिवेट करना किसी को या जस्ट इंस्पायर करना, it's not the aim. It is to take someone along from his emotional well-being, his personal well-being, his mental well-being, and then his knowledge of about life, and then especially his relationship. अब ये सारी चीजें जर्नलाइज तो सबको पता होती हैं, बट इन डेप्थ किसी को नहीं पता होती. So my journey started when I really left Pakistan to learn all those things from the people who really know that. इसके लिए इन चीज़ों को लर्न करें. सो आई हैड टू ट्रेवल ऑल अलोंग द वर्ल्ड, मुख्तलिफ लोगों के पास जाने के लिए. और फिर अभी पाकिस्तान में लोग जिन बुक्स का तज़किरा करते हैं, या मोस्ट ऑफ द मोटिवेशनल स्पीकर जब जिनको रेफर करते हैं, मेरे पर्सनल मेंटोर हैं. That's what I got in after 2007. To take care of your emotional health, mental health, relationship, leadership, and your personal well-being. So I'm qualified to take sessions. I am qualified to take a person from wherever he is, to take along maybe in a 3 months, 6 months, 9 months, or 1 year, to bring him back to the place where he really wants to be. और वहाँ से हम अपना then he can take on his journey. So ये था मेरा professional journey, और that's how I work. I hope that makes. माशाल्लाह, what a wonderful answer. और जो आपने इतनी अपनी पास्ट के बारे में बताया, एक्चुअली आई एम ग्लैड वी आस्क्ड दैट क्वेश्चन, क्योंकि ये तो बिल्कुल आपके प्रोफाइल में लिस्टेड नहीं था कि आपने लाइक अ टिपिकल यंग मैन, वो या तो पायलट बनता है, इंजीनियर बनता है, आपने एयरफोर्स पे कहा यार मैंने पायलट बनना है, एंड यू वेंट देयर, यू चोज द आर्म्ड फोर्सेस. तो वेरी वेरी ट्रेडिशनल स्टार्ट, and ended up in a highly non-traditional field by most professions, whether यहाँ पे पाकिस्तान में या दुनिया के किसी और खित्ते में भी लाइफ कोचिंग इज अ रिलेटिवली न्यू फिनोमेना. और इसी से जो आपने बातें कही कि जी इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ गो हैंड इन हैंड, वाकई आप सही कह रहे हैं कि जब तक वो उन दोनों चीज़ों की अलाइनमेंट ना हो जाए तो रियली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट समवेयर इन लाइफ. एंड आई एम ग्लैड कि आपने अपनी कॉलिंग को समझा, देखा, और उस पर फिर वाकई एक्ट अपॉन करके यू रियलाइज कि अच्छा जी देयर इज अ डायरेक्शन इन विच आई वांट टू गो. तो डॉक्टर साहब, इसी से थोड़ा सा आगे शुरू होते हैं, विच इज कि अगेन दुनिया के इस खित्ते में, पाकिस्तान में इन पर्टिकुलर, मेंटरशिप भी कम लोग सीक आउट करते हैं. जो लेट्स से वो अगर थेरेपी लेने की कोशिश करें तो वो कहते हैं यार आपको पता नहीं किस तरह के मसाइल हैं. जनरली आवर थॉट इज कि जी एक सोशल सेटअप हमारा क्योंकि मौजूद है, तो जनरली हम उसी सोशल सेटअप के तहत अपनी डिसीजंस करते हैं, चाहे वो लाइफ के डिसीजंस हो, चाहे प्रोफेशनल डिसीजंस हो. तो आपको पाकिस्तान में लाइफ कोचिंग प्रैक्टिस करने में कितनी दिक्कत आई है, किस किस्म के चैलेंजेस आए हैं, एंड व्हाट वुड यू एडवाइज टू पीपल के how to open up their minds to the reality that exists and the sounding board that exists with people like yourself, जिससे वो बेनिफिट कर सकते हैं, और किस स्टेज ऑफ लाइफ में उनको रुजू करना चाहिए to people like yourselves, because this service is now available. Awesome question. मेरा ख्याल है वो ट्राई के आपके टाइम बाउंड्रीज में मैं रहूं. बेसिकली मैं तो टाइम एंड स्पेस से आज़ाद आदमी हूं. हमारे जो इस फील्ड के अंदर जहाँ से आई बिलोंग, वहाँ पे तो हम, मेरा ख्याल है तकरीबन एक दिन में चार्ज अप होते हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए. बट
Coming up to your question, yes, it was really a hard journey for me. It was really a hard journey to introduce this field to Pakistan. There are very senior people who were already working in Pakistan, but I came with the different idea that I said that instead of talking to millions of people at once, talk to the leaders, talk to the people who can create millions of leaders around them. मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था, पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले तो इसको यू वर वेरी राइट कि इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता कि लाइफ कोचिंग टाइप की कोई चीज़ भी एग्जिस्ट करती है। और अगर उसको थोड़ा सा और बात करें कि कोई थेरेपीज किसी की बात करें या आप साइकोलॉजी की कोई बात करें या मेंटल हेल्थ की बात करें, उसके ऊपर तो वैसे ही लोग डरते हैं कि शायद मैं पागल हूँ या मेरे साथ कोई मसला है जो मैं उसके पास जाऊँ। लेकिन टू माई हॉरर व्हेन आई केम इनटू दिस फील्ड एंड आई स्टार्टेड ऑफ, तो मुझे पता चला कि यहाँ तो चीज़ें आपकी सोच से भी ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, आपकी सोच से भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। वो जो आपने कहा कोकून में रहने वाले मामलात हैं कि उससे बाहर आना बड़ा मुश्किल काम है। शॉर्ट करके अगर मैं बताऊं, आई टेल यू, अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी में भी देखेंगे ना, और अगर कभी थोड़ा सा डीपली गौर करेंगे कुछ स्टूडेंट्स को, यू विल सी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं एंड दे आर लुकिंग फॉर समवन के जो उनकी बात को समझे या सुने, लेकिन उन्हें कोई समझने या सुनने वाला कोई नहीं होता। आई एम टॉकिंग दिस थिंग आफ्टर लॉट ऑफ एक्सपीरियंस विद द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एंड पीपल अराउंड मी। वो नहीं पता होता बिकॉज दिस इज अ पर्सनल सेशन एंड पर्सनल टाइप ऑफ कॉन्फिडेंशियल कोचिंग आई कंडक्ट, जिसमें इट स्टार्ट्स फ्रॉम ऑलमोस्ट 9-10 साल के बच्चों से लेके आई हैव कोच्ड ऑलमोस्ट 70+ years ऑफ पीपल, राइट, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कामयाबियां भी हासिल की हैं, जिन लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव भी किया है, मे इट बी एनी प्रोफेशन। तो वहां जाके भी लोग बॉग डाउन हो जाते हैं आफ्टर अचीविंग एवरीथिंग, मे बी इन अ फाइनेंशियल in their professional world, at the end of the time, and आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में सुसाइडल रेट भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम इस फील्ड में सोचते नहीं हैं, देखते नहीं हैं, तो हमें पता नहीं है कि व्हाट ऑल इज़ गोइंग अराउंड अस। हमें सिर्फ वही खबर पता चलती है जो कहीं किसी वजह से सोशल मीडिया पे आ जाए या न्यूज़ में आ जाए, अदरवाइज द रेट इज़ वेरी हाई, मैं आपको बता दूँ। एंड आई ऑलमोस्ट एवरी डे मैं सुसाइडल टेंडेंसीज वाले बच्चों को डील करता हूँ, इवन बड़ों को भी डील करता हूँ। सो दिस थिंग इज़ वेरी अलार्मिंग। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि पाकिस्तान में यस, आज से 2-3 साल पहले या उससे पहले जब मैं रियली पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट लाया था तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में एक्सेप्टेंस अब आ रही है। अब आप देखेंगे कि बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स और लाइफ कोचेस यू सी ऑल अराउंड यू, और वो अपनी अपनी डोमेन में अपने अपने तरीके से, कोई रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से उनको मोटिवेट करता है, बच्चों को, लोगों को, कोई प्रोफेशनल करता है, कोई पैसा मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से करता है, कोई बिजनेस, कोई एंटरप्रेन्योरशिप के लिहाज से करता है। सो पीपल आर वर्किंग ऑन इट। लेकिन उसके अंदर जो चीज़ हाईलाइट करने वाली है कि लोगों की मेंटल हेल्थ और इमोशन के, पैसे तो कमा लेंगे, एंटरप्रेन्योर भी बन जाएंगे, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे लोग ये भी कर लेंगे, लेकिन जो मेंटली उनके अंदर चल रहा है वो बहुत सीरियस मसला चल रहा है। और जब तक ये वाला एड्रेस नहीं होगा, एंड दैट गोज टू द पेरेंटिंग, से मेरा ख्याल है बाहर आ जाना चाहिए कि हमारा जो सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, फैमिली सिस्टम, और इसके अंदर तो बहुत ज़बरदस्त है। ये मैं आपको बहुत दिल की बात बता रहा हूँ कि हमारे अपने ही फैमिली सिस्टम के अंदर, चूंकि पेरेंट्स ने खुद नहीं सीखा कि हाउ टू
एक बच्चे को डील कैसे करना है, उसकी नीड्स को कैसे देखना है। और चूंकि आज के बच्चे और हमारे दौर के बच्चों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, दिस द डिजिटल वर्ल्ड, दुनिया जो है वो चेंज होके आपके सिर्फ एक पाम जितने मोबाइल के ऊपर आ गई है। एंड देन द कम्युनिकेशन बहुत, आप देख लें कि एक ग्लोबल विलेज ही बन गई है ये दुनिया, तो चीज़ें चेंज हो गई हैं। सो पेरेंटिंग चेंज नहीं हुई है। सो वी नीड टू चेंज दैट पेरेंटिंग स्टाइल नाउ। अब हमें उनको समझने की जरूरत है, और इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू चेंज पेरेंट्स। और मेरे पास जब कोई पेरेंट्स किसी बच्चे को लेके आते हैं तो वो इस अजम्पशन के साथ आते हैं कि आई विल ट्रीट दैट चाइल्ड, आई विल टेल देम कि ये बच्चा गलत है, इसको कोई प्रॉब्लम है, ये बीमार है, और लेट्स ट्रीट हिम। और जब मैं उससे बैठता हूँ और उसको टाइम देता हूँ, मुझे पता चलता है कि बच्चा वाकई बिल्कुल ठीक होता है। द प्रॉब्लम इज इन पेरेंटिंग। अब पेरेंट्स को जब ये बात बताई जाती है कि सर प्रॉब्लम आपके बच्चे में नहीं है, आप में है, तो वो एक और नया प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। बिकॉज सही इट बात। इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक पेरेंट्स अंडरस्टैंड कि वो भी गलत हो सकते हैं, या वो भी कहीं ना कहीं उन्हें भी जरूरत है ग्रूमिंग की। तो ये जो ओवरऑल चैलेंज है, आप अगर एक स्टूडेंट को अगर आप कोच करना चाह रहे हैं, अगर वो आप तक आ गया है किसी वजह से, सो अब उसके टीचर्स भी इन्वॉल्व होंगे उसमें, मे बी समवेयर देयर एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व होगी। अगर कोई बच्चा घर की तरफ से आया तो उसके पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। तो दिस इज अ 360 डिग्री कोचिंग साइकिल। सो आई कम, मेरे काम में फिर मुझे एक अंडरस्टैंडिंग जब डेवलप हो गई पाकिस्तान के कोच, तो जब बच्चे को आप कोच करते हैं तो फिर वो पेरेंट्स को भी करते हैं, समटाइम उसके सिबलिंग्स को भी करना पड़ता है, सो दैट कि ये सारा का सारा जो फैमिली सेटअप है वो वापस रिवाइव हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बहुत सारे लोगों को मैंने कोच किया है जिनकी लाइफ बहुत बुरे हालात में थे, जिसमें डिवोर्सेस के चांसेस थे, सुसाइड के और बहुत सारी चीजें। तो अल्लाह का शुक्र है, द रिजल्ट्स हैव बीन वेरी अमेजिंग, और लोग अब इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, बट डेफिनेटली इट विल टेक मोर टाइम। Fantastic, fantastic. So, sorry, Doctor, can you hear me? Okay, I think you जी can. प्लीज। जी, so डॉक्टर साहब थैंक यू। आई थिंक आपने बिल्कुल सही कहा कि दो चीज़ों पे आई थिंक आई डेफिनेटली हैव मेड नोट्स कि जी मेंटल हेल्थ वाकई पाकिस्तान में उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। एंड वी हैव अ साइकोलॉजी प्रोग्राम इन प्लेस which in fact focuses a lot on child development। और जो आजकल हमारे सोसाइटी में like other societies in the world, हम एक वो sheltered society नहीं रहे अब। We are truly open to the global world out there because internet, media, सब चीजें इतना ज्यादा आपको exposure देती हैं। चाहे आप मुल्क से बाहर ना निकलें, अपने घर से बाहर ना निकलें, you are bombarded constantly with information which is of a global nature। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जी it's a different world than the world you grew up in, I grew up in, our parents, our children are now growing up in। वो बहुत फर्क हो गया है। So mental health is very much a very active part of our lifestyles and must be nourished both spiritually and psychologically। and इसमें I think बहुत सारा आपका और आपकी तरह के लोग जो हैं in the field, they are much needed। दूसरा, आपने जो पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में बात की, बिल्कुल सही कहा कि आई थिंक यस, हमारा सोशल नेट और सोशल नेटवर्क के प्लसेस भी हैं, पॉजिटिव्स हैं, कुछ कॉन्स भी हैं, बिकॉज समटाइम्स वो स्टाइफल कर सकते हैं बच्चों की ग्रोथ को, वेदर वो पर्सनल ग्रोथ हो या प्रोफेशनल ग्रोथ हो, करियर ग्रोथ हो। एंड अगेन इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि उनको करियर काउंसलिंग में भी एक फ्लेवर दें, सच एज टुडेज फ्लेवर के get them exposed to leaders in their own fields of different sorts so that we can उनके अंदर the वो कहते हैं ना जी, the answer is within you, we have to help them come out and understand what their passion is। क्योंकि the best thing that you can do I think in going into the professional world is कि आप अगर अपने professional calling और passion को आपस में mate करके align कर दें, there's nothing better than it, and I'm sure you will agree। So, Dr. Saab, let's switch gears a little bit and focus on some of the things, क्योंकि आपने माशाल्लाह इतने लोगों को ट्रेन भी किया है, उनसे बातें की हैं, उनसे सीखा है, उनको सिखाया भी है।
what are some of the traits and some of the, let's say, ideal habits that you feel make what is a good leader, in your opinion? Zabardast, most relevant question. We have come now onto the topic. I tell you, मुझे मैंने मैंने जैसे आपसे कहा कि the total journey is come to 30 years, because back in 1991 I left my home and today is 2021. इस सर्च में के what I want, तो आर्मी में भी रहते हुए लीडरशिप हमारा सबसे बड़ा एक टॉपिक होता है, और लीडरशिप इज वेरी वाइटल रोल प्ले करती है आर्मी और डिफेंस फोर्सेस में। लेकिन अगर आप मुझे थोड़ा सा सही समझें तो लीडरशिप को जो मैंने बहुत डेप्थ में जाना ना, वो बहुत बाद में जाके मुझे पता चला कि लीडरशिप कितनी इम्पोर्टेंट और कितनी बड़ी चीज़ है, जो हम सब की ज़िंदगी में उसकी इम्पोर्टेंस कितनी है। मैंने सिस्टम में रहते हुए भी कभी लीडरशिप को इतनी डेप्थ में नहीं समझा था जितना कि जब मैं इस फील्ड में आने के लिए निकला तो मुझे समझ आई कि लीडरशिप क्या होती है। टू मेक अ लीडर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक विक्टिम पर्सनैलिटी से निकल के लीडरशिप पर्सनैलिटी के अंदर जाना पड़ता है। नाउ हर चीज़ अब मैं जब बात करूंगा वो आपकी नॉर्मल डिस्कशन जो आप सुनते हैं उससे थोड़ी सी डिफरेंट होगी। प्लीज बियर विद मी, because I would like to give this concept of leadership. The leadership is not only in your title. It is not a management. It is not a managerial. It is not something कि वो आपका कोई यूनिफॉर्म है या कोई आपका टाइटल है या आपका कोई रैंक है या कोई आपका कोई पोजीशन है. It's not a leadership that you can call a management, that you call it an administration. चीजें लीडरशिप इज समथिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ लीडरशिप? लीडरशिप इज ऑल अबाउट इन्फ्लुएंस, नथिंग मोर, नथिंग लेस. यू हैव टू इन्फ्लुएंस पीपल बाय योर करेक्टर, बाय योर persona, by your personality, by your honesty, by your courage, by your knowledge, by your vision, and by your passion. That is a leadership. पोजिशनल लीडरशिप कोई और चीज होती है। आपको एक पर्टिकुलर पोजीशन दे दी गई है, आप अगर लोगों को कंट्रोल करके अपना काम ले रहे हैं, सो यू आर नॉट अ लीडर। अगर आपको लीड करने के लिए किसी पोजीशन की पहले जरूरत पड़ती है, किसी टाइटल की जरूरत पड़ती है, तो बी श्योर नॉट अ लीडर। लीडर जो होता है वो इवन बगैर किसी टाइटल के भी लीड कर लेता है, बिकॉज वो लोगों के ऊपर इतना इन्फ्लुएंस करता है उन तमाम चीजों से जो मैंने अभी बात की है, बाय योर करेक्टर, बाय योर विजन, बाय योर करेज, बाय योर ऑनेस्टी, बाय योर वैल्यूज। वो एक्चुअल में लीडर होता है। अब व्हाट इट टेक्स टू बी अ लीडर इज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कम आउट ऑफ द विक्टिम पर्सनैलिटी टू द लीडर टाइप पर्सनैलिटी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं एक विक्टिम पर्सनैलिटी प्ले कर रहे होते हैं। हमें बहुत सारी कंप्लेंट्स होती हैं कि ओके मेरे माँ बाप ने मेरे साथ ठीक नहीं किया, मेरे सिबलिंग्स ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरी स्कूलिंग अच्छी नहीं हुई है, हमारे टीचर्स अच्छे नहीं थे, हमारा गवर्नमेंट सिस्टम अच्छा नहीं था, मैं गलत जगह पे पैदा हो गया, माई कंट्री हैज इश्यूज, माई विलेज हैज इश्यूज, माई सिटी हैज इश्यूज. यू विल फाइंड पीपल विद नंबर ऑफ कंप्लेंट्स. They will have complaints and blames. They cannot learn leadership. First of all, the basic step is get out of this type of personality and take responsibility of your life. Okay, it is fine that you took birth in a very small or very poor family or an area. Fine. But if you have come up to your 20s and still your mind is working, still you are speaking, still you are learning, still you know that what this world is, then it's your responsibility starts from here, that how you now navigate your life. So जब आप ब्लेम करना बंद कर देंगे, विक्टिम पर्सनालिटी से बाहर निकल के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, ओके फाइन,
whatever the parenting style my parents had, whatever the village or city or place I was, whatever the college or university I was given, but this is now is the time that I have to take my own responsibility and stop blaming others. And whatever I am here, it is because of my own choices. Your own choices have made you whatever you are today. So यहाँ से ये बात start होती है. The day you will stop blaming others, the day you take responsibility, your leadership journey starts. हम्म, And then you will see the magic of leadership. That how your personality, just imagine, आप एक लेंस पहना हुआ होता है, the lens of being victim. आपने वो लेंस उतार के लीडरशिप का लेंस पहन लिया. अब आप चीजों को किसी और जगह से देख रहे हैं. Now whatever happening to you, you are just looking at that I am the leader. I have to face them. I have to come out of all these worries. I have to come out all these obstacles and hurdles and whatever is happening. I am the one who has to find out the way. I am the one who have to pave the way. I am the one who have to really now give, the vision to people who are around me, who are there to follow me. So यहाँ से your leadership starts, and then it is unending process. It is till your death कि आप leadership को learn करते चले जाएंगे. You have to become a leadership student forever. और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि आपके लिए चीजें, ये मैजिक हो जाएगा कि आपके लिए चीजें चेंज होना शुरू हो जाएंगी. यहां से फिर आपको अंडरस्टैंडिंग लेना पड़ेगी कि आप किस लेवल की लीडरशिप तक जाना चाहते हैं. When you become a father, you are a leader to your family. When you become a husband, you are a leader to your family. When you become a teacher, you are a leader to your students. When you become a vice chancellor, you are a leader to your whole students and the faculties and all those people around you, and including your family. So जो आपकी जिंदगी में आपका स्टेटस बढ़ता चला जाता है, आपके नीचे लोग जो इन्फ्लुएंस होने वाले हैं वो बढ़ते चले जाते हैं. And all of them look forward to you. And a person जो दूसरों को सेफ फील कराए, आपके अराउंड लोगों को आपके अंडर सेफ, वो अपने आपके पास जब वो आए तो उन्हें लगे कि यस वी आर एट अ राइट प्लेस. जब वो आप लोगों की तरफ लुक फॉरवर्ड, ऊपर उठा के सर देखें आपकी तरफ, तो दे गेट अ पीस ऑफ माइंड दैट नाउ वी आर हियर एट अ प्लेस. ऐसे इंसान के सामने है जो अब हमें रास्ता दिखाएगा. दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू यू. दैट इट टेक्स टू बी अ लीडर. To be a leader, you have to, you have to go in a depth of this vision building and to show to the others कि जो चीज आप देख रहे हैं वो आप लोगों को भी दिखा सकें. जब आप कहते हैं ना कि मैंने अपनी टीम से कहा मेरी टीम मुझे सही तरीके से काम नहीं कर सकी, it is not the thing. It is the thing that you are unable to show them your dream. You are unable to show them your vision. You are unable to communicate with them. I can talk on and on and on and on, but just to sum it up, एक अच्छा लीडर बनने के लिए सबसे पहले take responsibility, then understand the leadership values, and you have to value most your people, जो लोग आपको फॉलो करने वाले हैं. और उसके बाद there are lots of things to learn. There is a leadership laws, or I would recommend you, like this is a book, if you can see, this is a book written by John C. Maxwell. It is the 15 invaluable laws of growth. ये अपने स्टूडेंट्स को जरूर बताएं. उसके बाद there is another book, Put Your Dream to Test. हम सब लोगों के ड्रीम्स होते हैं. ये सारी लीडरशिप बुक्स हैं. हम सब लोगों के ड्रीम्स होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये ट्रू ड्रीम मेरे लिए है भी या नहीं है. और फिर उसके बाद हम डिप्रेशन में जाते हैं, एंजाइटी में जाते हैं, स्ट्रेस में जाते हैं जब हमें वो चीज़ अचीव नहीं होती. सो दिस इज अ बुक, इट्स अमेजिंग बुक, Put Your Dream to Test. I'm not, by the way, promoting those books, but I'm just telling you these are the good books which made difference to my life. And by the way, these are the books which have been given to me by John Maxwell himself with his sign. Then is another book I would recommend you. Everyone Communicates, Few Connect. Everyone Communicates, Few Connect.
मैं एक्सप्लेन करूंगा इनको. देयर आर लॉट ऑफ मोर बुक्स. देयर इज अ बुक का जो और भी 21 इररिफ्यूटेबल लॉज ऑफ लीडरशिप. ठीक है, ये बुक है. देयर आर लॉट ऑफ मोर. एक और बुक बता के फिर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको करके करूंगा. इंटेंशनल लिविंग. ठीक है जी. अच्छा, अब लीडर बनने के लिए आपको क्या चाहिए? नंबर 1, आपको कम्युनिकेशन चाहिए. You should be awesomely good to communicate with yourself and with the people around you. एक अच्छा लीडर बनने के लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल एट द बेस्ट होनी चाहिए. एक अच्छा लीडर बनने के लिए आप में करेज होनी चाहिए. बिकॉज इन द लीडरशिप जर्नी यू विल हैव सो मेनी अप्स एंड डाउन्स के many times you will feel like to give up. So you have to have a courage to face all those ups and downs to your life. A leadership बनने के लिए you must have a vision. एक बड़ी पिक्चर आपके जहन में होनी चाहिए. What are you up to for yourself, for your family, and for the people who are really following you? In whatever capacity you are, in whatever field you are, you must know what is exactly your vision is. And then you can translate that vision into the people's language. जो लोग आपके नीचे या आपको फॉलो करने वाले हैं उनको बताने के लिए. Then you have to be dead honest to yourself with the people as well. That it takes to be a leader. There are a lot more you can talk about, but here is that accept first of all that what is your journey, what it takes to be there, and what are the mistakes we have to accept them. First of all, जब आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो देन आप फिर लीडरशिप के क्राइटेरिया से बाहर निकल जाते हैं. देन यू आर नो मोर अ लीडर. क्योंकि एंड देन मेयर द सक्सेस एज you have to measure anything which is so takes to be a leader. I'm giving up for your next question, otherwise I'll keep speaking. No, I think बिल्कुल डॉक्टर साहब, थैंक यू. आई थिंक वेरी पर्टिनेंट पॉइंट्स आपने मेंशन किए. और जो मैं दो चीजों को पॉइंट आउट करूंगा. एक तो वो ट्रेडिशनल विक्टिम विलन हीरो वाला जो ट्रियाज है, और हमारे अगेन पाकिस्तान में with the blossoming media, I think हमारा media like any other media in the world, it goes on sensationalism. So the art of storytelling, I think जो communication की भी आपने बात की in the second part of your recent comments, I think वाकई कि हमने अपना narrative खुद control करना है. We cannot blame or play victim anymore. It is time to take charge, and once we identify what our calling is, what our vision is as a country, and वो trickle down effect है, leadership from the top going to the bottom. लेकिन I think it is everybody's responsibility that we must hold ourselves accountable to having a good moral yardstick, ethical yardstick, because there's too many shortcuts available to students. और आपने जो बातें की कि जी you have to have the communication skills, the courage, the vision, and then being honest to yourself and the people around you. I think those are 4 key tenets, and I would say कि हम bottoms up शुरू करें. We need to inculcate that in our education system, in our professional system, because again there is many a slip between the cup and the lip, and it's always the easy way out to try and find that shortcut which may get you to where you want to be, but is where you want to be truly where you want to be? That is the question that I think सबने हमने अपने आप में ये पूछना है. अगर थोड़ा सा मैं ट्विस्ट करूं, I think we just have a few minutes left, डॉक्टर साहब, कि as an educational institution and as a center for higher education, what is it that you feel कि हम 3-4 चीजें अपने students में जो instill कर सकते हैं और जो इनके teachers, professors को guide कर सकते हैं to instill as part of the curriculum in daily practice? What could some of 3 or 4 things be that you feel that we can help our students develop? आवाज ड्रॉप हो रही. What I will do is जी लास्ट मोमेंट पे कुछ मुझे समझ आई है बात की.
मैं वीडियो ऑफ करके थोड़ा सा करता हूँ कि करंटली आपका क्या ख्याल है कि हमारे स्टूडेंट्स में एज एज ए सेंटर फॉर हायर एजुकेशन अपने स्टूडेंट्स में हम किस तरह की वो लीडरशिप क्वालिटीज अपने प्रोफेसर्स के थ्रू या लेट्स से सेशंस के थ्रू इंस्टिल कर सकते हैं, और किस तरह से इंस्टिल कर सकते हैं टू हेल्प देम बी मोर प्रिपेयर्ड टू हिट प्रोफेशनल लाइफ एंड टू बिकम बेटर लीडर्स? ओके, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन आपका? जी सर। Oh, I think I seem to have lost you. Hopefully आप अभी भी हैं with us on the conversation. Sorry, Dr. Saab, are you still there? I think the minute देते हैं. Let's hope that Dr. Saab is able to rejoin. Sorry, hopefully Dr. Saab will rejoin and हम अपने session को इख्तिताम पे लेके आ सकते हैं very shortly. Just bear with us for a couple of minutes. I think I see. जी Dr. Saab, I think I'm back. we lost. जी you're back. तो आवाज आ रही है अभी? आवाज आ रही है. अच्छा, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हुआ था नेट में या क्या No हुआ। problem. अच्छा, मुझे जो समझ आई थी आपके क्वेश्चन की, आपने कहा था कि through the education system हमें कौन सी ऐसी चीजें जी sorry, I think briefly we lost you, but I think towards the end again हमें आपकी आवाज आ रही थी. जी बिल्कुल, कौन सी इस तरह की चीजें हैं जो हम ग्रूम कर सकते हैं और इंस्टिल कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स में टू हेल्प देम बिकम बेटर लीडर्स? सबसे पहली बात ये है कि अगर आपको भी मेरी सही आवाज आ रही है तो जस्ट बिल्कुल आभार. बुक कर दें। सबसे पहली बात यह है कि आपका जो फोकस होना चाहिए, इट शुड बी अ कैरेक्टर बिल्डिंग। Sorry Dr. Saab, I think we're having difficulty hearing you without again. कैरेक्टर Maybe अगर आप थोड़ा सा वीडियो ऑफ कर लें for the last few minutes. वॉइस काफी ब्रेक हो रही है जी. जी, पता नहीं कोई इंटरनेट अनस्टेबल है किसी स्टेज पे। नो नो आइडिया। प्रॉब्लम. आपको आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है जी फिर से. माय अपॉलॉजीज अगर मेरी नो तरफ से है। प्रॉब्लम. आइडिया नो प्रॉब्लम. अच्छा, मैं ये अगेन गॉन। नहीं जी, वी कैन हियर यू. अच्छा, मुझे बस अब आपकी वो नहीं आ रही है वीडियो या कोई चीज। अच्छा, but we I can hear you just fine. इसका मतलब है कि मैं फिर कैरी ऑन करता हूँ, फिर बीच में आप जी थोड़ा प्लीज. सा आवाज से वो करते तो रहिएगा। सबसे तो पहले मैं ये बात कर रहा था कि आप एट द आउटसेट हमें एक एजेंडा बनाना चाहिए कि वी मस्ट फोकस ऑन द कैरेक्टर बिल्डिंग ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक. क्योंकि विदाउट अ ग्रेट कैरेक्टर यू कैन नेवर बी अ गुड लीडर। अंडरस्टूड. एंड द सेकंड थिंग इज के बच्चों को स्टार्ट से ही द डिफ नाउ जी कैन यू आवाज आ हियर रही मी? है. ठीक आई है। कैन हियर यू जी. सो होता क्या है कि मैं बहुत सारे सीनियर लोगों को ये देखता हूं कि उनकी नजर में लीडरशिप इज ऑल अबाउट रैंक्स, ऑल अबाउट द पोजीशन, ऑल अबाउट द टाइटल, ऑल अबाउट द पावर।
सो ठीक। लीडरशिप को इस चीज से हटा के आपने बताना, लीडरशिप इज समथिंग जो आपके इनसाइड होती है। यू आर एज अ पर्सन, एज अ लीडर, यू जी। आर लीडर टाइप ऑफ अ पर्सन, आप कह लें कि आप किसी भी स्टेज पे जब भी आप क्राइसिस लीडरशिप रूल, and now coupled with those the title and management skills and your position, you really become the international leader. हम्म। अब सेकंड चीज बच्चों में ये डालने की जरूरत है कि ये जो लीडरशिप है ये सिर्फ और सिर्फ एक स्मॉल लिटिल जॉब या कंपनी या बिजनेस तक महदूद नहीं है। यू शुड बी थिंकिंग वेल बियॉन्ड दैट, so that you can represent Pakistan all over the world. अब कोई भी कंट्री दुनिया का ऐसा नहीं है जो अपने आप को इंटरनेशनली अलाइन नहीं करता तो वो सरवाइव कर सके। द इंटरनेशनल पीपल एंड इंटरनेशनल प्रोग्रेस टेक्नोलॉजी। सॉरी डॉक्टर साहब, आई थिंक थोड़ी सी दिक्कत हो रही है फिर से। Sorry, we seem to have lost you again. Chale, we'll attempt a final time with Dr. Saab. Hopefully we can catch him. I think he seems to have dropped off again. Chale, I think to recap, all in all, a very good session by Dr. Khalid Mahmood. I think to recap our discussion, I think the fact about imparting good communication skills as a leader is key in this whole atmosphere. Having the courage and the vision to be able to pursue what it is that you want to pursue, and being honest to yourself and the people around you are the key takeaways. And I'm sure, Dr. Saab, you're back. मैं समराइज कर रहा था because we're almost out of time. तो मैं समराइज कर रहा था about the excellent session and mashallah the takeaway and the tips. Or I think it's important to stress upon the point that leadership skills can definitely be learned. I think you will definitely vouch for this कि yes, great inbuilts भी होती हैं, लेकिन आप अपने आप को you can certainly pull yourself up, and as long as you have the introspection to realize कि जी आप में क्या खामियां हैं और कौन से potential areas of improvement हैं और कौन से already innate आपके advantages हैं, and you can then hone them and use them to your advantage. And the biggest one by far, मैं आपसे 100% मुत्तफिक हूँ इस पे कि जी communication and the art of storytelling is half the battle won. And of course, talking cannot be complete without being able to listen well, and to listen both emotionally with your head and with your heart. तो मैं कहूँगा कि जी, I think that's a very very important part of being in a seat of higher education, especially, is to be able to get knowledge imparted to you, understand and comprehend what's being thrown at you every day. I think Dr. Saab, we've lost him again. But I think with that, हम Dr. Saab के बहुत मशकूर हैं कि वो हमें join कर सके. I will probably take him. Oh, Dr. Saab, your I think net का कुछ issue है. But my apologies for the technical difficulties that we faced during the session, but luckily towards the end. And with that, we will thank Dr. Saab for the time that he gave us today, and inshallah I'm sure कि given the technical difficulties आप हमें इजाजत देंगे to invite you on campus inshallah for a face-to-face session at Noor International University. I would love to visit your university, और मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात होगी, एंड रियली बहुत मजा आ रहा था. बट वही बात है, यही लीडरशिप है कि ये हार्डशिप्स आएंगी, चाहे वो लाइव सेशन में आए या आपकी नॉर्मल लाइफ में आए. सो यू हैव टू मूव ऑन विद दैट, और उसको आपने लेके चलना होता है साथ साथ. तो बड़ा मजा आ रहा था बातचीत करके,
Inshallah, we will continue the session in लेट्स person. कम अप टू द, अब आपका टाइम पूरा हो गया तो सम अप करने की तरफ। थैंक यू सर। बस यही हम कहेंगे कि जी लाइफ ऑफ कोर्स विल नॉट बी अ बेड ऑफ रोजेस, इट विल थ्रो इट्स ओन सेट ऑफ चैलेंजेस एट यू। आपने इसको रेडी रहना है टू बी फ्लेक्सिबल, to be able to embrace the change. You will fall down, you will dust yourself off, and you will get up again to face the world again. Whatever doesn't kill you definitely makes you stronger. NLP को study करें, neuro linguistic programming. It's an art and a science together. It's something जो कि अगर आप थोड़ा सा अभी at young ages grasp करें तो आपके जहन में the brain has the power of synapses which can really be we brought to the forefront if you understand what it's all about. So ये एक वही art and science है which you can train your mind to do more. हमें कहा जाता है कि we use probably 2 or 3% of the mind as we know it today. अल्लाह ताला ने इतना कुछ इसमें रखा है we're supercomputer and then some. तो कोशिश करें कि आप अपने आप को बेहतर करें हर रोज और सोचें इसके बारे में कि हाउ कैन आई improve yourself, myself. Thank you again for joining us in this live session. मैं ऑडियंस को भी थैंक करूंगा, अपने हमारे आज गेस्ट फॉर टुडे डॉक्टर खालिद को भी थैंक करूंगा फॉर joining us, and इंशाल्लाह फिर इन पर्सन मुलाकात होगी at NIU's campus. डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच सर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बहुत थैंक शुक्रिया, यू। सॉरी फॉर इंटरप्शन, गॉड नोज के वी नो हुई, प्रॉब्लम, लेकिन एनीवे थैंक इट यू, वाज अ ग्रेट सेशन। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया।